Hey guys, Crickbuck is back and I would just like to start with हम फाइनल पहुंच गए हैं। जैसे कि हमने कहा था वर्ल्ड कप हमारा है। इंडिया इंडिया India, इंडिया yeah, इंडिया। yeah. और फाइनली फाइनली जो सफर हमने शुरू किया था 11 हर्डल्स के साथ 10 हर्डल पार हो चुके हैं और हम फाइनल हर्डल में हैं। एंड वी आर गोइंग टू अहमदाबाद, जहां पर अब फिर दोबारा हॉस्पिटल के बेड बुक होंगे, सब कुछ बुक होगा क्योंकि सब कुछ पैक होने वाला है, सब कुछ बुक होने वाला है उस दिन। और वी आर जस्ट अवेटिंग हु वी विल फेस। तो मैं बस इससे शुरू करना चाहूंगा कि आई नो मैंने करण और अभिषेक ने गेम साथ देखा है। हमारे इमोशन जो थे, आंसू भी निकले और सब कुछ था। आई वुड जस्ट लाइक टू स्टार्ट विद सिड बिकॉज सिड हमारे साथ नहीं आ पाया था। तो आई जस्ट वांट टू नो सिड, what was your feeling when was your eyes like little bit like you felt like crying? भाई जब वो पार्टनरशिप चल रही थी क्या नाम है विलियमसन और मिचेल Mitchell. की I was Yeah, like means at first I was like oh this is impossible but how they built it uh, I needed stress buster तो मैंने एक तरफ अपना बोधी बिठाया हुआ था न्यू बॉर्न लिया हुआ था मैंने oh these are bringing me calm but like honestly there was one time मैंने बोला oh my god आज वो ही ना हो जाए it would have been so disappointing but hats off आज हमने सेमीफाइनल नहीं आज हमने शमी फाइनल खेला तो yeah. शमी भाई आके एकदम Nice. हाँ, कमाल कर गए Yeah. चलो ए से स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक टॉस तो हमारे फेवर में था ही। फिर यार अब लेट्स स्टार्ट विद आवर बैटिंग ऑर्डर। भाई आई थिंक हम एक एक बैट्समैन के बारे में आज बात करते हैं यार। वर्ड्स अबाउट रोहित शर्मा बिकॉज आई फील जो बैटिंग में था ना, सबका रन्स डजंट मैटर, लेकिन सबने जो भी करा है सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन था यार। मतलब रोहित ने जो करा है ना आज, लिटरली कि ट्रेंड बोल्ट आ रहा है, जैसे ही वो ओवर द विकेट आया तो उसको आगे बढ़ बढ़ के छक्के मार रहा है, अराउंड द विकेट में कुछ और कर रहा है। लाइक आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि ट्रेंड बोल्ट ने कहा होगा कि यार मैंने पहली 6 बॉल इतनी बढ़िया डाली, उन्होंने फिर भी 10 रन दे दिए, ये क्या मतलब हो Yeah. रहा है? तो आई गेस just put out your views on, like in short, just put out your views on Rohit Sharma. I'll start with you, Karan. Yeah, Rohit Sharma is an emotion. He has set the tone for the whole match, as he did in South Africa match as well. The way this guy is playing selfless cricket, like ये definition होनी चाहिए. अगर कोई बनाए इसकी definition, तो it's a selfless cricket, and that's what it is. He's a true leader. Doing what is required for the team, and that's what he's here for. कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लाइमलाइट नहीं चाहिए. ही जस्ट देयर टू प्ले एंड विन. और वो बहुत अमेजिंग फीलिंग आ रही है उसको देख के. इवन वी वर टॉकिंग, जब वो आउट होके गया है वो बालकनी में, पूरे टाइम वी वर थिंकिंग कि इसने ज्यादा एनर्जी लगाई है बालकनी में बैठ के than in the Exactly. ground, because he was like over there, being expressive and so forth. It was great to watch, and hats off to him, man. Yeah. Abhishek. यार रोहित शर्मा मतलब अगर कोई डेफिनेशन पूछे ना वॉक द टॉक की, तो इट हैज टू बी दिस मैन. ही इज जस्ट लिटरली वॉकिंग द टॉक. मतलब दिनेश कार्तिक ने भी राइटली कॉल आउट किया कि ही वाज आफ्टर द 2022 वर्ल्ड कप दे नीडेड अ माइंडसेट चेंज ऑल टुगेदर. स्किल वाइज कभी भी कमी नहीं थी पूरी टीम में, माइंडसेट चेंज की बात थी, और वो माइंडसेट चेंज वो अपने अंदर करके दिखा रहा है पूरी टीम को. एंड इनफैक्ट आई थिंक Yeah. श्रेयस अय्यर की भी यही स्टेटमेंट थी कि जो अग्रेसिव इंटेंट वो दिखाता है, आई नो इट माइट नॉट कम अप समडे, बट जो इंटेंट वो दिखाता है, जो बॉडी लैंग्वेज वो बैटिंग के टाइम पे शो करता है कि विद सच डिसडेन ही डिसमिसेस बॉल्स, आई थिंक दैट इज प्योरली रोहित क्लास मैन. आई मीन obviously Rohit deserves a special kudos for the way he has batted this World Cup. Sid, your pick of the World Cup. Man, I told you before all this started, like Rohit Sharma is gonna come in with an intent. Yeah. Lazy elegance, my man. Hats off. But all credit to Rohit Sharma. And honestly, like I feel like आज से 2-3 साल बाद जब भी ये वर्ल्ड कप की बात होगी, probably like Kohli will get the credit because of all the centuries, which he deserves. Yeah. But honestly, जैसे बैटिंग में आया, like our team played like a champion team. Like everyone Yeah. played their role, and that's Yeah. what matters. Rohit का वो role था, Exactly. कोहली का एंकर रोल था, श्रेयस
had to Hmm. come in and like maintain the tempo. Yes, like Rohit, you have to lead from the front, which he's been doing consistently. But we are batting and even bowling. We are playing as a champion team, so that's why I have like 99% confidence that World Cup hamara hai, guys. Yeah. Yeah. So the next batsman we are coming to is our so-called King Emperor Kohli. So actually I just would sum up like this कि यार ये ना एक proper team है जो एक they are feeling this belonging to each other kind of feeling, right? और ये अब लोग कहेंगे कि यार रोहित ये है कोहली ये है, आई थिंक वी शुड नॉट थिंक ऑफ, और ये थोड़ा अपना थिंकिंग चेंज करनी चाहिए. आई थिंक रोहित है तो कोहली है, एंड कोहली है तो रोहित है, Yeah. राइट? और ये दोनों टॉप बैट्समैन पता है क्यों है? बिकॉज दे सेट अप अ रोल, एंड 11 में से वो 8 या 9 आपको टाइम करके दिखाएंगे. जो यार जो बाकी टीम्स है वो तुम्हें क्या लगता है रोल सेट करके नहीं आती हैं, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी क्या होती है? 11 में से 2 बार, 3 बार. Yeah. ये जो बंदे हैं ये भाई 11 में से 9 बार इन्होंने करके दिखा दिया उन्होंने कि हम ऐसे ही करेंगे. रोहित जाएगा, अटैक करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा. कोहली जाएगा, ओवर्स मैक्सिमम ओवर्स खेलेगा. 550 मारी है भाई, 300 मार दी है 11 गेमों में. 100 की एवरेज है एक बंदे की. दूसरे बंदे का स्ट्राइक रेट 150 का, 160 का है. हर बॉलर को बेचारा परेशानी कर देता है कि करना क्या है. तो आई थिंक यार दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन वी एवर हैड. लाइक आई बिलोंग टू सचिन एरा एज वेल, बट कई बार मुझे लगता था कि सचिन अकेला रह गया आज, राइट? अंटिल लेटेस्ट ऑफ द करियर जब युवराज, सहवाग एंड एवरीबडी जॉइंड. बट उससे पहले ना फिर भी फीलिंग आती थी कि यंगस्टर्स हैं सारे, लेकिन फिर भी यार सचिन अकेला रह गया है. और वो भाई इन दोनों ने तो ना लिटरली इस वर्ल्ड कप में कह दिया भाई कोई अकेलापन नहीं है. कोहली है तो रोहित है, रोहित है तो कोहली है. दैट्स व्हाट For आई sure. फील. Yeah. तो वर्ड्स अबाउट विराट कोहली करण. एंड यार वो फीलिंग जो है ना, जब सब मैच का पहला जो आंसू शायद था, जो मैं शायद छुपा गया वो होगा, I know. जब कोहली ने पक्का सेंचुरी उसी करी, टाइम पे. कोहली और सचिन को दिखाते हैं ना भाई, मेरा वहां आंसू आ जाते हैं कि यार इस बंदे में कितनी रिस्पेक्ट है सचिन के लिए. आई जस्ट एडमायर दैट. Yeah, वही है, like as you said, everybody is enjoying each other's success, right? और इससे बढ़िया चीज कोई एक टीम के लिए हो नहीं सकती. When you start celebrating your teammates' success, that means you have already won. तो वो Yeah. चीज एक दिखने को मिल रही है, and I think that's what corresponding into their performances as well. कि भाई अगर कोई डाउन होता है तो दूसरा पंप अप करता है, and he performs better than to compensate. तो वो चीज बहुत अच्छी गई है उन्हें. एंड यार ऑब्वियसली रोहित एंड विराट duo in this World Cup, and it's not about how the roles have been defined or anything. उनमें जो camaraderie दिख रही है on the field, off the field, वो ना एक दिख जाता है कि they both are enjoying each other as well. And not only them, the whole team around them are also having the same feeling. तो वो एक बहुत amazing चीज है. And obviously the moment when we all were teared up was जब कोहली की सेंचुरी हुई है and he brought down to Sachin and he's like, this is the epic moment कि भाई यहाँ पे कर दिया है मैंने. But that Right. is like a golden moment for a 90s kid कि भाई Yeah, सचिन yeah. सामने बैठा है and Kohli is Exactly. going in front of Sachin. So Yeah. go ahead Abhishek. यार मेरी कोहली से आई थिंक इट्स ऑल, आप मतलब इन तीनों को तो पता ही है कि मेरी कोहली से सिर्फ एक कंप्लेंट रही है, उसका हाँ. नॉकआउट फॉर्म. और आज उसने जो जवाब दिया है सबको, राइट? क्योंकि और मेरा जो डिसअपॉइंटमेंट रहा है इज बिकॉज ऑफ स्टैचर. मतलब वो इतना बड़ा प्लेयर और इतना अच्छा प्लेयर है, उसको कभी मिस नहीं करना चाहिए था, राइट? उसने अपने आप के लिए वो एक्सपेक्टेशन, बट जो आज उसने करके दिखाया ना, सेमी में, नॉकआउट में 100, एंड इन ऑल लाइकलीहुड ही इज लाइकली टू कंटिन्यू द सेम फॉर्म इन द फाइनल एज वेल, नॉकिंग वुड. वो that is the massive respect. I knew 50th century would come, and I knew he's probably going to shatter all records in ODI cricket. There are to be broken, right? So, and nobody's not even gonna, and nobody's gonna come close to those records now. But the For way sure. he handled the pressure today, and mind you, it was a pressure game, right? He scored 100. He scored a free-flowing 100. Strike rate may not suggest that way, but जो उसने पूरे वर्ल्ड कप में किया और स्पेशली आज किया, मैसिव रिस्पेक्ट मैन, मैसिव. Yeah, Sid, your love for Kohli now. Yeah, means you guys have like checked all the points which I was about to say. कि like रोल सबके डिफाइन होते हैं, बट टू एक्चुअली एग्जीक्यूट इट कंसिस्टेंटली लाइक across 10 games, जैसे
पांच half century मार दी, 3 century मार दी, that's a champion player, right? And again, like, once you only get criticism if you have expectations too. So I guess like Yes. Abhishek or Mera वही point था, like, okay, like you need to do it on the big stage, and like today was one of the biggest games, semi-final, and like we can't deny 50 hundreds, man. Like nobody even think of like 50 hundreds. That's a remarkable achievement. So he's a champion player. Our team is playing as a team. Yeah, like it's just looking as a champion team. As a spectator, Kohli, Rohit, how you said, like they stood up. They're leading from the front. Plus they are giving confidence from like the younger player than Kuldeep, KL Rahul. All of a sudden, like 3 months back, he was getting all the Yeah. criticism, and right now it seems like Dhoni part आएंगे two. आएंगे केएल पे आएंगे, अभी Part रुक जाओ, two एक is एक on the एक एक करके. field. बट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू गाइस, लाइक आज हम सबने ही देखा है जो गेम में, यार वो मोमेंट कुछ अजीब सा नहीं लग रहा था जब हमें समझ में नहीं आ रहा था एक दो बार तो, लेकिन उसके बाद आगे जब हम तीनों साथ बैठे थे सेट, वो जो कोहली बार बार इशारे करे जा रहा था, लेकिन एक्चुअली दे हैड अ Yeah. प्लान. वो बार बार पूछे जा रहा मैं मारूं क्या, अब मैं मारूं और वो वहां से उसे बोले यार भाई तू खड़ा रहे, तू आराम से खड़ा रहे, बाकियों को मारने दो. अब तो भाई हमने हिटमैन की बात कर ली, किंग की बात कर ली, तो भाई हियर कम्स द प्रिंस. एंड आई गेस यार हम कह रहे हैं 50 100 मुश्किल होंगे, मुझे लग रहा है भाई हमारा ये बंदा ये 50 100 का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा. लाइक द वे अगर ओडीआई क्रिकेट में प्रॉपर चांसेस मिलते रहे, द नंबर ऑफ ओडीआईज कोहली हैज प्लेड इन दिस मेनी इयर्स, आई थिंक ही विल ब्रेक द रिकॉर्ड्स. और शुभमन गिल के यार, लेकिन आई विल से कि इनिंग्स तो क्लास थी, लेकिन आई वुड से कि यार मेरे को लगता है कि बहुत से प्लेयर ऐसे होते जो 80 पे ना रिटायर होके ना जाते. बट Yeah. आई लव्ड इट ही पुट द टीम फर्स्ट कि यार सेमी Yeah, की 100 exactly. बनेगी, बाद में बन जाएगी, मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मेरे से रनिंग नहीं होगी या वो नहीं होगी, क्योंकि कोहली का आधा गेम खत्म हो जाता अगर रनिंग बंद हो जाती तो. तो Yeah, आई for थिंक sure. कमेंडेबल फॉर हिम कि यार ही टुक द डिसीजन इन फेवर ऑफ टीम और वो 79 पे चला गया, वरना वी न्यू इट कि वो आराम से 100 बना लेता है. स्ट्राइक रेट भी बहुत जबरदस्त था उसका, सब कुछ था. तो एनीथिंग टू ऐड करण ऑन शुभमन गिल? Yeah, no, but you made a very good point. And I still want to give a credit to the top management, Rohit. वो selfless cricket जो उसने भी show किया, I think वो हर एक पूरी टीम में दिख रहा है. And Yeah. Gill going out and saying कि भाई it's okay, I'll come back and everything. That definitely set the tone, because आज के मैच में the way New Zealand responded, हमें ये पता था कि अगर ये स्कोर इधर उधर होता, game would have been different. तो कोई वो चूक नहीं थी. It was a perfect game where we wanted the scores and everything, right? So hats off to that. बाकी यार गिल की एक चीज मैंने देखी है, he actually capitalizes on the situation. उसको पता है कि रोहित मार रहा है, मेरे को कम बॉल्स मिली हैं, इट्स ऑल गुड. वंस रोहित गॉट आउट, उसने जो एंटी अप की है अपनी जब उसको चांस मिला है, एंड दैट गेव कोहली अ चांस टू बेसिकली बिल्ड अप हिज इनिंग्स. तो ये चीजें लोग समझते नहीं है कि क्रिकेट में आइदर इट्स बैटिंग और इट्स बॉलिंग, इट्स ऑल पार्टनरशिप. तो वो जो एक दूसरे को बैकअप करने वाली चीजें हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड दिस शोज कि इसको समझ आता है क्रिकेट. तो हैट्स ऑफ टू दैट. अभिषेक? यार देख, मेरे को तो शुभमन गिल से पहले ही उम्मीद थी. I knew he was gonna go big today, and I was hoping he was my player to watch out for last evening as well when we were discussing this. But yeah, शुभमन गिल is definitely someone else, man. अगर वो अपनी फॉर्म और अपना वो मेंटेन करके रखे ना, he's gonna be the best batter India would have produced in the next few years, for the next few years, right? So मतलब आने वाले, he's gonna rule cricket like Virat Kohli has been doing that, right? And selfless again, rightly called out. People will think यार ये कैसे retired और कैसे हो गया. It was actually in favor of the team, right? They wanted a fresh batsman who could have continued the scoring उस time पे, right? और अय्यर आया, उसने अपना, because obviously he showed what he could do. And credit to Shubman to go in and make sure and not be selfish कि मैं 100 कर लेता हूँ और 21 रन मार लेता हूँ खड़े खड़े जितने मुझे लगते हैं. उससे न्यूजीलैंड को भी मेंटल एज नहीं होने दिया उसने उस चीज पे. Exactly. Said? Yeah, man, he's the next superstar, without a doubt. Yeah. To the point वो retire hurt इसलिए हुआ, उसने बोला let me save the best for last. Ahmedabad. Yeah. So I feel like he's due.
he's due. So he's gonna play. I'm hoping he's gonna play a big knock and yeah, save for the last. And that would be the ultimate. India once wins the World Cup. Legacy moves on to Shubman Gill from Kohli and Rohit. What a ending, right? Bollywood. Yeah. या परफेक्ट सो नाउ और अब आ रहे हैं हमारे इंडिया के एक्चुअली क्या कहते हैं बेस्ट एक्टर जो कहते हैं बात तो सही है और हमारे बेस्ट भाई टिकटॉकर जिनको मतलब हम कह रहे थे यार ये पता नहीं जगह है या नहीं है भाई ही केम ही कॉन्कर्ड आई डोंट नो लाइक क्या हुआ क्या उसको भाई द स्ट्राइक रेट ही इज प्लेइंग विद हार्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट की भाई उन्होंने बैक किया आई थिंक पूरा इंडिया शायद इस बंदे को बैक नहीं कर रहा था लेकिन मैनेजमेंट ने बैक किया एंड यार क्या मोमेंट चुना है भाई उसकी लाइफ का तो पहला ही सेमीफाइनल था यार एंड ही Yeah. केम एंड ही कॉन्कर्ड एवरीथिंग मुंबई ग्राउंड था उसको पता था शॉर्ट बॉलें भी डाली गई हैं सब कुछ हुआ है बट श्रेयस अय्यर यू ब्यूटी मैन लाइक स्टिल आई मुझे तेरी मूछें पसंद नहीं है लेकिन अगर रन आ रहे हैं तो ये मूछ ऐसी रहने दियो छेड़ियो मत इस मूछ को भाई जब से वो मूछ आई है वो भाई कुछ अलग ही हो गया है तो सिड अब तू शुरू कर क्या बोलेगा भाई श्रेयस अय्यर के बारे में भाई I feel again there were a lot of players उसमें से एक श्रेयस अय्यर था जिसने हम सबका क्रिटिसिज्म लिया पूरी देश का क्रिटिसिज्म लिया बट they're playing as a champion उसने I think युवराज सिंह के बाद he's the only second number 4 player in World Cup to score century and that to back to Yeah. back और आज की इनिंग में like honestly my player like batting wise अगर शम्मी 7 विकेट नहीं लेता he was my man of the match उसने जैसे Okay. टेम्पो बना के रखा he just like dominated spin आज तो बाउंसर से भी भाई को डर नहीं लग रहा था but great innings like one of the best innings of this World Cup for me. Yeah. अभिषेक नहीं यार, kudos to him, right? और I think देखते देखते we didn't even realize he is like the third top most या fourth top most scorer, 526 runs पे है and मतलब the number 4 that we needed. 2019 वर्ल्ड कप में वो हमारा Achilles heel था नंबर 4 स्पॉट हमने पता नहीं बहुत सारे अनगिनत प्लेयर ट्राई किए कॉम्बिनेशन नहीं वर्कआउट हुए 2019 के बाद से he is literally owned that spot. Obviously, I think as spectators and fans, we were also a little impatient. You know, we knew this for a fact. He's a decent bat, but we then thought, yeah, nahi, I don't know, maybe somebody else can you know be a better number 4. But he proved everybody wrong, and you know it's amazing to see the kind of confidence that he's exuding now, right? बहुत मजा आ रहा है उसकी बैटिंग देख के and kudos to him and thank God that we found him. या करण Yeah, Abhishek said it right. As fans, because emotionally we are invested a lot, right? So short term memory हो जाती है सबकी. But after 2019, he was the number 1 choice for number 4 spot because उसने perform किया and he was continuously performing for that. Kudos to management, and this shows कि यार they know cricket and they understand Spears' abilities. जैसे उन्होंने राहुल को back किया है, the same way they backed Iyer as well. And the main thing which was you know little gutsy on their part is कि भाई Iyer was injured, so वो Australia series में ही वापस आया था just before the World Cup, and they're like, let's do this. And he took like couple of innings to get going, but yeah, guys, hats off. Within like 3-4 innings में वो top 5 scorers में आ गया World Cup के. This shows कि भाई he has the class, he has that temperament to play the game, and he's hats off man. Like 67 balls or something, 100 complete कर रहा है उसने in such you know pressure game. Hats off. I'm glad we have players who can perform in the semifinals and knockout stages now. And yeah, looking forward to a good final. You know, maybe 100 from him again. I guess now comes the last batsman. I think यार मुझे लगता है कि भाई क्यों ये लोग फैब 5 फैब 4 करते हैं आई थिंक इस वर्ल्ड कप को उठाओ तो फैब 5 पांचों के पांचों इंडिया के लिए खेल रहे हैं और हमारे लिए खेल रहे हैं Yeah. वही है फैब भाई Agreed. केएल राहुल यार यू ब्यूटी मैन लाइक केएल राहुल Lovely, man. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट गेम आई नो आप उसके रन्स देखोगे उसके रन्स को इतने मतलब सबसे ज्यादा नहीं है क्योंकि वो नंबर 5 पे आता है यार बट उसकी एवरेज 70 की है
सेल्फलेसनेस ही मेरे ख्याल से उसने शुरू करी है पहले गेम से कि कोहली की 100 होने दो, दूसरे गेम में भी कोहली की 100 होने दो, तीसरे गेम में अय्यर की 50 होने दो। यार वो बंदा बिल्कुल सेल्फलेस हो गया है और वो भाई क्या करता, और लिटरली पता है वो कहते हैं ना कि जैसे कि इफ यू ट्राई टू डू समथिंग गुड, गुड थिंग्स विल हैपन टू यू। आई गेस Yeah. केएल राहुल के साथ सारी गुड थिंग्स हो रही हैं यार। उसकी कीपिंग क्या लग रही है, आई थिंक एज अ कीपर ही इज नॉट अ परमानेंट कीपर, बट आई गेस तुम उसका अगर कीपिंग रिकॉर्ड देखोगे सबसे टॉप पे होगा वो मेरे ख्याल से। Yeah. क्यूटी के और केएल राहुल की फाइट होगी और किसी की तो फाइट भी नहीं है जो प्रॉपर कीपर्स हैं। एंड देन आई थिंक वी शुड रीनेम द सिस्टम डीआरएस टू नाउ प्रीटी मच यू नो आरआरएस, राहुल रिव्यू सिस्टम। भाई वो भी बिल्कुल धोनी जैसा एक्यूरेट हो गया, मतलब एक धोनी गया है और लाइक सक्सेसर इन अ वे कि यार वो रोहित सिर्फ भागता है और सीधा राहुल के पास जाता है, हाँ भाई क्या कर रहे हैं, और वो जो बताता है यार लिटरली देयर इज नो लाइक Accurate. गार्बेज टेकन बाय इंडियन टीम। आई थिंक वो बहुत बड़ा रोल है जो वो प्ले करता है, और कीपिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, कैचेस भी बहुत अच्छी कर रहा है। तो आई थिंक फैब फाइव का डिस्कशन खत्म करें, फैब फाइव इंडिया के पास ही है अब। लिटरली वी Hmm. हैव द फैब फाइव, हमारे टॉप 5 है जो फैब फाइव है। तो Yeah. सिड व्हाट विल यू से अबाउट केएल राहुल? भाई धोनी की कमी नहीं खली है इस टूर्नामेंट में। मुझे लग रहा है Yeah. धोनी से ट्यूशन ले रहा है फ्रॉम हाँ फिनिशिंग। लाइक सबने आज के मैच में भी यही बोला, वो सूर्य को भेज जाओ था जब लाइक 4 ओवर रह गए थे। Yeah. लाइक फ्रॉम या फिनिशिंग टू गेम प्रेजेंस जैसे, एंड प्लस कीपिंग। आज वो एक एलबीडब्ल्यू शाउट हुआ जब इन्होंने रिव्यू ले लिया, उसने स्टंप माइक में पहले ही बोल दिया था एम्पायर्स कॉल आएगी। सो Yeah. it's just like he's like fully invested and he wants to prove himself, prove the entire nation who was against him wrong by his performance, either it's batting, keeping. uh, Honestly मुझे तो ऐसे लगा like we have Dhoni part 2 इस पूरे टूर्नामेंट में, and I hope he continues in every format like this. Yeah. या करण? Yeah, I am still in awe with his first catch जो उसने डेव कॉनवे का लिया था. Like it was हाँ too quick जबरदस्त। and that या guy just dived to the left. It was too good. So hats off to his keeping skills. I think 3-4 कैच तो आज कर ही गया होगा वो शम्मी की बॉलिंग चार पे. कैच है, चार 4 कैच है हाँ। कैचे. So hats off, man. And bro, yeah, you're totally right. The way this guy is this shows कि वो कितना too much into the game है. एक भी बॉल नहीं मिस करता है. And he's concentrating to the extent कि भाई he knows if it is out or not. तो वो it is only the way because 50 over is a long format. शम्मी का भी वही एग्जांपल हुआ. He might have not thought कि भाई मेरे पास कैच आएगा और वो एक सेकंड ही आपको मिस करवा देता है. Whereas राहुल shows कि भाई इतना into है कि हर बॉल में invested and he's reviewing it so thoroughly. So hats off to that. And obviously as he's a vice captain as well. So I think वो एक step up करके दिखाना कि भाई ठीक है सूर्या is सूर्या but I am also KL Rahul. And that's what he did. Came and great cricketing shots. I don't know why वो reverse का वो मारने की कोशिश कर रहा था जो बनने के वो बजा नहीं. So but normal shots, hats off. Too good. अभिषेक? यार आज वाली रेट इनिंग ना उसकी सबसे अंडररेटेड रहने वाली एंड द लीस्ट टॉक्ड अबाउट होगी, बट हिज Yeah. 39 ऑफ 20 बॉल्स वाज एक्चुअली द डिफरेंस इन द मैच, राइट? अगर हाँ वो 39 नहीं करता वो और तो 360 पे हम शायद रुक जाते, और वो 360 पे रुकना शायद इवेंचुअली टारगेट वुड नॉट हैव बीन सफिशिएंट. बहुत अंडररेटेड इनिंग्स इन टर्म्स ऑफ हिज बैटिंग. कीपिंग तो यार ऑब्वियसली आई मीन even if Pant and Kishan are back, I think he should continue as a full-time keeper in ODIs as well. He for sure. deserves that, and the reason for his such great ability of decision making during the DRS process is actually because of the fact that Shant Dimag ka, he's not overexcited by things. He's not like roughed up or into the moment too much. He's just observing, making sure he's concentrating like you guys rightly called out, and इस वजह से उसका वो DRS रिव्यू का जो वो है इतना स्ट्रांग है, and hats off to him especially with his batting. बहुत amazing innings थी आज उसकी. या लाइक अब बैटिंग में हमारे पास फैब फाइव है, आई थिंक इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग भी फैब फाइव हमारे ही फैब फाइव है, ठीक है। Yeah. बट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि यार आज मैं ये जो सारी टेंशन है बॉलिंग वाली ये सिर्फ एक ही बंदे को देना चाहता हूँ, बिकॉज अदर्स आज में भी थोड़ा ऑफ डे था, ठीक है, और थोड़ा विकेट भी टफ था,
आज वो वाली कंडीशंस भी नहीं थी कि बहुत ज्यादा बॉलिंग कंडीशंस हैं और थोड़ी मिसफील्डिंग्स भी हुई हैं, लेकिन उसमें भी मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ यार वी वेंट लाइक टू मच रॉन्ग. Like Jadeja Yeah. giving 10 over 63 runs on a very flat wicket, it is a good spell. लेकिन obviously हमारी expectations इन लोगों ने जो set करी है ना कि हर टीम को Yeah. 80 पे रैप कर देना, 90 पे रैप कर देना, तो I think वहां पे. But now let's discuss यार man of the day man, like what a guy Mohammad Shami is. He comes, he 6 मैचों में भाई बंदा 3 बार 5 विकेट ले गया यार वो. 23 विकेट. He's the leading wicket taker of the World Cup. He's leading wicket taker for India. He has broken Zahir Khan's record of 21 wickets, which was highest by an Indian. And then he broke the best bowling record in the World Cups, which was Ashish Nehra 6 for 23 against England in 2003 World Cup. So he has shattered all the records. And moreover, I feel a little emotional saying about him that यार ये बंदा सुसाइड करने वाला था. He went through such a turmoil, right, personal life में, and this guy did this for the country. I think man, मतलब जितना हमें कोहली, रोहित और इन सब की बात कर रहे हैं, उन सबका अटेंशन मिला के आप ऐड करो ना, वो मोहम्मद शमी को मिलना चाहिए. That's what he Sure. deserves. Just Definitely. because अब यार he is not a brand या उसको बोलने का इतना वो नहीं है, that doesn't mean कि मोहम्मद शमी has more, like I think like he's more than Zahir Khan to us man. हम इस वर्ल्ड कप में मेरे को लग रहा है 2 जहीर खान लेके खेल रहे हैं. बुमराह और शामी को अगर मैं लेके चलूँ ना कि हम 2 जहीर खान है हमारे पास इस वर्ल्ड कप में, और शायद तभी ये लोग ये कह रहे हैं कि ये बेस्ट बॉलिंग है फॉर श्योर. तो योर व्यूज ऑन दैट अभिषेक, I'll start with you. Agreed. But definitely, we were obviously looking back at history. So Zahir Khan ne jo kiya, we wanted somebody to repeat that, and he's gone one Yeah. step ahead and done better than that, right? So Yeah. and obviously, not taking away anything from Bumrah, आज का उसका दिन, he was not in the same rhythm that he usually is, but for Shami to come in and step up just because the second premier bowler is not there was hats off, and especially those 2 wickets that he took in that over, जो उसने लेथम और विलियमसन को आउट किया within the span of I think 6 balls, yeah, same over में I think. Yeah. Yeah, so amazing. मतलब वो game changing moment था उस point पे. Glenn Phillips came in, he took like 10-15 balls to settle down, and the game had started to go out of reach of New Zealand by the time Phillips had settled it. So बहुत ज़्यादा crucial wicket थी. Although I know he himself called it out, जो उसका drop catch था, he shouldn't have done that. But ठीक है, मतलब it part and parcel of the game. It is about how you come back and lift yourself up, and he did the exact same thing, which we were hoping he would, and he did. Sid, Shami. Man, I'm a big Shami fan. Just being a fast bowler myself, just understanding the psyche. मेरे हिसाब से in the last 7-8 years, Bumrah and Shami has been like whenever I love watching Shami bowl. Like his seam position, whenever he's bowling, I just enjoy watching his bowling, and that's where like I feel मेरे को Indian cricket पे कहीं ना कहीं इरिटेशन होती है. सी whenever हमारी टीम ने एज अ टीम खेला है, वी हैव ऑलवेज आउट परफॉर्म्ड इवन आवरसेल्व्स, व्हिच वी कैन से दैट इस टूर्नामेंट में भी हो रहा है. इफ वी रिकॉल T20 वर्ल्ड कप, आई नो सभी बोलते हैं यार उसको वन वाइट बॉल में मार भी पिट जाती है, बट माई थिंग इज लाइक क्लास इज परमानेंट, राइट? लाइक अगर तुम सही लेंथ मार रहे हो, वेदर इट्स टेस्ट मैच, T20, you have probability of getting more wickets doing the damage. तो जब इसको T20 में नहीं लिया था, फिर कोई इंजर्ड हुआ, इसको आया. So that to me as a viewer, I was like India is not gonna do good because man management ही poor थी. तुम ऐसी टीम पे लेके जा रहे हो, अच्छा IPL ने 2 लोंडो ने अच्छा कर दिया, उनको ले लिया. You were not backing skill. But hats off to that guy, man. Like 7 wickets in one day, and that too against a strong team like New Zealand. Biggest stage, probably semi-final, Wankhede Stadium. Amazing. Like I feel bad for New Zealand. Unko Shami khelna hi nahi aata. In 2 matches, he has taken like 12 12 wickets. wickets. Yeah, in one day, that's crazy. But yeah, he's a superstar, like you said. Bumrah also gets way more limelight than him, but I feel like 7-8 साल में जितना भी इंडियन क्रिकेट ने ओवरसीज भी अचीव किया है, शमी हैज
a big role to play in that. Agreed. Yeah. Karan? Yeah, Sid mentioned a very good point. And शमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी उसने यही चीज बोली क्या था कि आई वाज वेटिंग फॉर माय चांस इन द वाइट बॉल क्रिकेट. मैं नहीं ज्यादा खेल रहा था बट आई न्यू कि जब मेरा चांस आएगा आई एम गोना डिलीवर. And the reason for that is he's consistent with his line and length, and he knows which, just bowling up there, and these are the test lengths which Sid is talking about. That's what good bowlers are. And Josh Hazelwood is one of those. McGrath used to do the same, right? So ये वो bowlers हैं जो longer format खेले और इनको समझ आती है. So hats off to him यार कि he waited for his chance, and जब chance आया है वो deliver भी ऐसा किया है कि भाई सारे पीछे छूट गए. And hats like really happy that we have such player in our team. Just one thing I want to say, maybe a little off topic as well, but as the fans, I know हम emotionally both invested होते हैं सब होते हैं, but I want to say to everybody कि भाई, and it's not just us, like the overall fan community, यार रिलीजियस कमेंट्स देना जब प्लेयर परफॉर्म नहीं करते या कुछ. आई थिंक वी शुड रीफ्रेम आवरसेल्व्स. We are a mature nation now and we understand our cricket. I know we are all invested, but when these players go on the field, irrespective of their religion or background, they're there to perform for the country. And that's what we should be doing. So I'm very happy that he has performed, and people are now noticing that thing that mehnat rang lati hai, and he deserves all the credit. So hats off to this guy, and really happy for his success. Yeah, Bhai, man. before Amazing. Yeah. before we move on, I यार हार्दिक पांड्या का कंट्रीब्यूशन नहीं भूलना चाहिए. वो इंजर्ड हम्म. हुआ तभी हमें शमी मिला. वो साला की एंकल को आज या प्लेयर ऑफ द नहीं, आज टूर्नामेंट. मीम आया था. हम जब गेम देख रहे थे तो करण हमें मीम्स शेयर कर रहा था, तो उसमें मीम में था कि आज एचआर मैनेजर आया देखने की टीम कैसा परफॉर्म कर रही है. बट और जो किसी क्या क्या वाइफ थी इस बंदे की, चिल अपना फोटो भी जो भी पहन के आया है. यार, वो तो सेट यार, आई विल से कि यार वो तो ऐसे ना बहुत से बंदों की कंट्रीब्यूशन है जो हम मतलब एक वीडियो में सम अप भी नहीं कर पाएंगे. जैसे जो मैनेजमेंट हो गई, या जैसे टेस्ट में जैसे पंत का जो कंट्रीब्यूशन है. यार गेम आपका जब लेवल उठता है तो ओवरऑल ही आपका हर फॉर्मेट में गेम उठता है. आई डोंट फील कि आप अगर टेस्ट में जीते हो तो वो ओडीआई या टी20 में आपको बेनिफिट नहीं करेगा. बेनिफिट करता है, राइट? एक तो दूसरी टीम पे जो आप प्रेशर डालते हो. तो आई थिंक यार प्रीटी मच दिस वाज लाइक आवर इंडिया गेम थिंग, लाइक लॉट ऑफ इमोशंस एंड सो बॉयज, वर्ल्ड कप हमारा है एंड फाइनल में हम सब तैयार होंगे विद ढोल Yeah. नगाड़े, everything, right? And we'll all be watching together with more and more friends and everyone. So, World Cup hamara hai, boys. So just Yeah. let's वर्ल्ड go कप and हमारा है guys. वर्ल्ड World कप Cup. हमारा है. Yeah. so जो सोने ना दे वो सपना, टीम का Team ड्रीम का है dream है अपना. अपना. So here we are signing off. We'll be back with your video. Bye guys. Please like, share and subscribe.